ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग। तो ऑडिट सैम्पलिंग क्या है? ऑडिट सैम्पलिंग जो है रेफर करता है एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स, लेस देन 100% ऑफ आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन that is relevant under audit, such that all the sampling units, that is all the items in the population, have a equal chance of selection. ठीक है। तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑडिट प्रोसीजर्स का टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन जो कि रिलेवेंट है ऑडिट के अंदर, और जिसमें कि ना सारे सैम्पलिंग यूनिट्स दैट आइटम्स इन द पॉपुलेशन, जो कि आइटम्स है पॉपुलेशन में, उनका इक्वल चांस है सिलेक्शन का। So, application of audit procedures to less than 100% of items within a population relevant under the audit, such that all sampling units, that is, all the items in the population, have an equal chance of selection. अब ये इंश्योर करता है कि जो आइटम्स जो सेलेक्ट हुए हैं ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं एंटायर पॉपुलेशन को। तो दिस इज टू इंश्योर दैट द आइटम सेलेक्टेड रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, जो एनेबल करेगी ऑडिटर को ड्रॉ करने में कंक्लूजन और एक्सप्रेस करने में उसका ओपिनियन बेस्ड ऑन अ डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. This is to ensure that items selected represent the entire population, which enables the auditor to draw conclusions and express his opinion based on a predetermined objective. अब objective क्या है ऑडिटर का एज पर ऐसे 530? तो ऑडिट सैम्पलिंग जो है प्रोवाइड करती है रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ कंक्लूजन्स about the population from which the sample is selected. रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड करती है ऑडिटर को ड्रॉ करने में कंक्लूजन्स उस पॉपुलेशन का जिसमें से जो है सैंपल सेलेक्ट हुए हैं. So, the objective of the auditor when using audit sampling is to provide a reasonable basis for the auditor to draw conclusions about the population from which the sample is selected. स्कोप ऑफ एसए 530. एसए 530 जो है एप्लीकेबल है जब ऑडिटर डिसाइड करता है यूज़ करने का ऑडिट सैम्पलिंग परफॉर्म करने में ऑडिट प्रोसीजर, और ये ऐसे जो है ये स्टैंडर्ड जो है डील करता है ऑडिटर का यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. ओके. स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एंड डिज़ाइन एंड सेलेक्ट करने में ऑडिट सैम्पल को, परफॉर्म करने में टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, एंड देन इवेल्युएट करने में रिजल्ट्स ऑफ द सैम्पल सेलेक्टेड. When designing and selecting the audit sample, performing test of controls and test of details, evaluating sample results from the sample. ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस डील करता है विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू बी एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन्स ऑन विच टू बेस द ओपिनियन. ऐसे 500 lays down the means available to the auditor for selecting the items for testing. One of those is audit sampling. Hence, ऐसे 530 जो है कॉम्प्लीमेंट करता है ऐसे 500 को, बिकॉज ये मीन्स अवेलेबल. Essay 500 lays down the means available to the auditor for selecting the items for testing. One of those is audit sampling. Essay 530 complements Essay 500. अब पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन एक एंटायर सेट ऑफ डेटा है जिससे कि सैंपल जो है सेलेक्ट होता है और जो ऑडिटर है उस पर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करता है. तो पॉपुलेशन रेफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच अ सैंपल इज selected and about which auditor wishes to draw conclusions. The auditor should select sample items on in such a way that the sample can be expected to be representative of the population. This requires that all items in the population have a opportunity of being selected. Now characteristics क्या है population की? Population के तीन characteristics है: appropriateness, completeness and reliability. हाँ, एक सेकेंड. हाँ, reliable, complete and appropriate. सो अप्रोप्रिएटनेस, ऑडिटर को जो है डिटरमाइन करना है कि ऐसी पॉपुलेशन जिससे जो सैंपल ड्रॉ हुआ है वो अप्रोप्रिएट है स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए. द ऑडिटर विल नीड टू डिटरमाइन दैट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज सेलेक्टेड is appropriate for the specific audit objective, or appropriate means population from which the samples are drawn वो relevant है specific objective के लिए under audit.
So basically, the auditor need to determine that the population from which sample is selected is appropriate for the specific audit objective, and appropriate means population from which the samples are drawn shall be relevant for the specific objective under audit. So the auditor will need to determine that the population from which the sample is drawn is appropriate for the specific audit objective, and appropriate means population from which the sample are drawn shall be relevant for the specific objective under audit. This is because when the samples are drawn, the audit procedures are applied on the sample and the conclusions are projected on the population. जब एक सैंपल ड्रॉ होता है, जो ऑडिट प्रोसीजर्स है वो अप्लाई किए जाते हैं एक सैंपल पे, और उसके बेसिस पे ये ना कंक्लूजन जो है प्रोजेक्ट किए जाते हैं ऑन द पॉपुलेशन. इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर टू इंश्योर दैट द पॉपुलेशन इज अप्रोप्रिएट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, विल इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग. अब बेसिकली इस एग्जांपल में क्या दे रखे कि जो ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स है ना, उनको तो हम अकाउंट्स रिसीवेबल लिस्टिंग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. मतलब जब ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर का जब ऑब्जेक्टिव होता है ना टेस्ट करना ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, तब तो हम पॉपुलेशन को अकाउंट्स रिसीवेबल की लिस्टिंग में डिफाइन कर सकते हैं. लेकिन जब उसका काम होता है अंडर स्टेटमेंट चेक करना अकाउंट्स पेबल का, तब जो है हम उसको अकाउंट्स पेबल की लिस्टिंग में पॉपुलेशन को नहीं डिफाइन करेंगे, बल्कि वो सब्सिक्वेंट डिस्बर्समेंट होगा, अनपेड इनवॉइसेस होंगे, सप्लायर के स्टेटमेंट होंगे, अनमैच्ड रिसीविंग रिपोर्ट्स, या फिर अदर पॉपुलेशन जो प्रोवाइड करती है ऑडिट एविडेंस ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पेबल. सो इफ द ऑडिटर objective were to test overstatement of accounts receivable, the population could be defined as the accounts receivable listing. On the other hand, when testing for understatement of accounts payable, then the population would not be defined as account payable listing, but rather subsequent disbursement, unpaid invoices, supplier statement, unmatched receiving reports, or other population that would provide audit evidence of understatement of accounts payable. So, if the auditor's objective were to test overstatement of accounts receivable, the population could be defined as accounts receivable listing. But when testing for understatement of accounts payable, the population would not be the accounts payable listing, but rather subsequent disbursements, unpaid invoices, supplier statement, unmatched receiving reports, yeah, other population that would provide evidence of understatement of accounts payable. कंप्लीटनेस, तो पॉपुलेशन जो है वो कंप्लीट भी होनी चाहिए, which means the auditor intends to use the sample to draw conclusions about whether control activities operated effectively during the financial reporting period. The population needs to include all relevant items, that is all the activities that form that relevant internal control throughout the form part of the relevant internal control throughout the entire period. If the population is complete in all respects, तो हम उसको जो conclusion draw है ना उसको reasonable बोलेंगे. So basically, we have to read this only. The population also needs to be complete, which means that if the auditor intends to use the sample to draw conclusions about whether the control activities operated effectively during the financial reporting period, the population needs to include all relevant items that activities form part of the relevant controls throughout the entire period. If the population is complete in all respects, the conclusion drawn of the population will be considered reasonable. Now, reliable. जब हम ऑडिट सैम्पलिंग को परफॉर्म करते हैं ना, तो ऑडिटर परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर इंश्योर करने के लिए कि जो इन्फॉर्मेशन जिस पे ऑडिट सैम्पलिंग की गई है वो कंप्लीट और एक्यूरेट है. ठीक है. तो ऑडिटर को ऑब्टेन करना है एविडेंस रिलायबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, एंड अगर पॉपुलेशन जो रिलायबल नहीं है तो एक्यूरेसी सॉरी पॉपुलेशन अगर रिलायबल नहीं है विद एक्यूरेसी एंड सोर्स के उसमें, तो जो सैंपल ड्रॉन है वो रिलेवेंट नहीं होगा स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए.
So, when performing the audit sampling, the auditor performs audit procedures to ensure that the information upon which the audit sampling is performed is sufficiently complete and accurate. अगर ऑडिट और फिर हमको ऑडिट एविडेंस जो है ऑडिटर को ऑब्टेन करना है रिलायबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन को लेके, और फिर अगर पॉपुलेशन रिलायबल नहीं है एक्यूरेसी एंड सोर्स पे विद रिस्पेक्ट टू, तो फिर जो सैम्पल ड्रॉन है वो रिलेवेंट नहीं होगा स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए। तो तीन करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े पॉपुलेशन के। पॉपुलेशन क्या होता है? एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन, है ना। एंड उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है अप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस एंड रिलायबल। अप्रोप्रिएट में अप्रोप्रिएट होने चाहिए स्पेसिफिक ऑडिट पर्पस के लिए। फिर कंप्लीटनेस में कंप्लीट होने चाहिए सच दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। एंड रिलायबल में कंप्लीट और एक्यूरेट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन जिस पे हम सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं एंड ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ सैम्पलिंग यूनिट। अब इंडिविजुअल आइटम्स जो एक पॉपुलेशन को बनाती है उसको हम सैम्पलिंग यूनिट्स बोलते हैं। सो बेसिकली इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेकअप द पॉपुलेशन आर नोन एज सैम्पलिंग यूनिट्स। अब पॉपुलेशन जो है डिवाइडेड होती है इनटू सैम्पलिंग यूनिट्स वैरायटी ऑफ वेज में। इट इज अ सिलेक्शन from the population that is used in extrapolation of the population। सिलेक्शन पॉपुलेशन से जो यूज़ किया जाता है एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द पॉपुलेशन के लिए। और फिर ऑडिट प्रोसीजर्स जो अप्लाइड होते हैं इन यूनिट्स पे जिस पे कंक्लूजन जो है हम ड्रॉ करते हैं जो प्रोजेक्ट होता है द पॉपुलेशन। कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द सैंपल बिकम्स द कंक्लूजन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम वेयर इट इज ड्रॉन। इंडिविजुअल आइटम्स जो एक पॉपुलेशन को बनाते हैं, इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेकअप अ पॉपुलेशन, उससे हम सैम्पलिंग यूनिट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इफ द ऑडिटर ऑब्जेक्टिव, अगर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टेस्ट करना वैलिडिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, तो सैम्पलिंग यूनिट्स जो है कस्टमर बैलेंसेस या फिर इंडिविजुअल कस्टमर इनवॉइसेस की तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, तो सैम्पलिंग यूनिट को कस्टमर बैलेंसेस या इंडिविजुअल कस्टमर इनवॉइसेस, कस्टमर की बैलेंसेस या फिर इंडिविजुअल कस्टमर इनवॉइसेस डिफाइन करता है सैम्पलिंग यूनिट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सैंपल टू अचीव द पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्टिव। कंक्लूजन है ऑन द पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन द प्रोसीजर्स अप्लाइड ऑन द सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पल जो है रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वॉट एवर मे बी द अप्रोच स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, द सैम्पल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव। दिस मीन्स रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है क्लोजली सिमिलर, एग्जैक्टली सेम नहीं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सेम हो। So this means that it must be closely similar to the whole population, although not necessarily exactly the same. The sample must be large enough to provide statistically meaningful results. Large enough होना चाहिए sample provide करने के लिए statistically meaningful results. So sample must be representative, closely similar, not exactly the same, not necessarily exactly the same, and large enough होना चाहिए कि वो statistically meaningful results तो provide कर ही दे हमको। The sample should be large enough to provide statistically meaningful results. Now, सैम्पलिंग प्रोसेस जो है ना परफॉर्म होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे, जो कि हमने पहले ही देखा था। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो है आइडेंटिफाई करते हैं डेविएशंस फ्रॉम एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल्स, और टेस्ट ऑफ डिटेल्स जो है वो मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं अकाउंट बैलेंस और क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन के। सो टेस्ट ऑफ कंट्रोल सैम्पलिंग प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। सैम्पलिंग प्रोसेस जो परफॉर्म होता है ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, वो होता है आइडेंटिफाई करने के लिए डेविएशंस फ्रॉम एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल, और जो सैम्पलिंग प्रोसेस परफॉर्म होता है ऑन टेस्ट ऑफ डिटेल्स वो आइडेंटिफाई करता है मिसस्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शंस। तो ये दे रखा है इसमें। सैम्पलिंग प्रोसेस परफॉर्म्ड ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आइडेंटिफाई डेविएशंस फ्रॉम एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल्स, and sampling performed on test of details to identify misstatements of account balance and classes of transaction। नाउ अप्रोचेस टू सैम्पलिंग, दो तरह के अप्रोचेस है सैम्पलिंग के, एक तो स्टैटिस्टिकल और एक नॉन स्टैटिस्टिकल। तो अब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होती है? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग बेसिकली रैंडम सिलेक्शन है ऑफ सैम्पल यूनिट्स का। तो रैंडम सिलेक्शन करेंगे हम सैम्पल यूनिट्स का, फिर हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज़ करेंगे इवेल्युएट करने के लिए सैम्पल के रिजल्ट्स, जो इंक्लूड करेगा मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क करेक्टरिस्टिक्स।
So what is statistical sampling? Statistical sampling is basically random selection of sample units, फिर हम then use of probability theory to evaluate sampling results, वो include करेगा measurement of sampling risk characteristics. So statistical sampling is an approach to sampling. Basically एक approach है sampling का, that is the type of sampling. So statistical sampling is the approach of sampling that has the random selection of sample units and the use of probability theory to evaluate results, and including measurement of sampling risk characteristics. So अब एक approach to sampling. सैंपल जो है हम चूज करते हैं सर्टेन मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करके. तो सैंपल इज चोजन बाय अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स. Now, a sampling approach that does not have above features is considered as non-statistical sampling. मतलब जैसे कि जिसमें random selection नहीं होता है, sample units का probability theory का use नहीं होता है, evaluate करने के लिए results जो include करता है measurement of sampling risk characteristics. तो ये जब features नहीं होते हैं तो हम उसको consider करते हैं as non-statistical sampling. Sampling approach that does not have above features. आगे और थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेंगे. अब सैम्पलिंग अप्रोच, सॉरी, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का अप्रोच जो है ना, वो मोर साइंटिफिक क्यों है, उसके तीन रीजन होते हैं. क्योंकि उसमें मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन होता है. ठीक है, इसलिए ज़्यादा साइंटिफिक होते हैं. दूसरा, कोई पर्सनल बायस नहीं होता ऑडिटर का, है ना. और ये जो है रीजनेबल वाइड एप्लीकेशन है, मतलब इसमें जो लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स है ना, हम उसको सिलेक्ट टेस्ट करते हैं, इस वजह से ये जो है मोर साइंटिफिक होता है. तो उसको हम पढ़ते हैं एक बार. स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मोर साइंटिफिक. अब ऑडिट टेस्टिंग डन थ्रू दिस अप्रोच इज मोर साइंटिफिक देन टेस्टिंग बेस्ड एंटायरली ऑन द ऑडिटर्स ओन जजमेंट, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ mathematical laws of probability in determining the appropriate sample size in varying circumstances. तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जो ऑडिट टेस्टिंग है ना, वो साइंटिफिक सॉरी स्टैटिस्टिक अप्रोच से करेंगे ना, तो ज़्यादा साइंटिफिक होगी उस टेस्टिंग से जो सिर्फ ऑडिटर के ओन जजमेंट के उसमें की जाती है. क्योंकि ये जो है इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी. मतलब हम इसमें मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए अप्रोप्रिएट सैंपल साइज इन वेराइंग सर्कमस्टांसेस. मतलब सैंपल साइज को डिटरमाइन करने के लिए सर्कमस्टांसेस के हिसाब से मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज किया जाता है. मतलब पहले पॉइंट में ये दे रखा है जो ऑडिट ऑडिट टेस्टिंग है ना, वो स्टैटिस्टिक सैम्पलिंग के अप्रोच से जब होती है तब ज़्यादा साइंटिफिक होती है. बल्कि उस इन कंपैरिजन टू जो टेस्टिंग है वो एंटायरली बेस्ड जो ऑडिटर के ओन जजमेंट में. ऐसा क्यों? क्योंकि ना ये स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जो है इन्वॉल्व करता है मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करने में अप्रोप्रिएट सैंपल साइज को in varying circumstances. So, audit testing done through this approach is more scientific than testing based on entirely on the auditor's own judgment, because it involves use of mathematical laws of probability in determining the appropriate sample size in varying circumstances. Now, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में जो है ना, रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन होता है. ठीक है, रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन वेयर अ पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स. ठीक है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन होता है, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो हम टेस्ट करते हैं ना, वो कंसिस्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स, एंड मोर इन द केस ऑफ ट्रांजैक्शंस involving compliance testing, trade receivables confirmation, payroll checking, and vouching of invoices and petty cash vouchers. So, statistical sampling has reasonably wide application where a population to be tested consists of a large number of similar items, more in case of transactions involving compliance testing, ट्रेड रिसीवेबल्स का कंफर्मेशन, वाउचिंग इनवॉइसेस की, पेरोल चेकिंग, पेटी कैश वाउचर्स वाउचिंग ऑफ इनवॉइसेस,
petty cash vouchers, watching of invoices, payroll checking, compliance testing, and trade receivables confirmation. Now, there is no personal bias of the auditor in case of statistical sampling. Since it is scientific, the results of sample can be evaluated and projected on the whole population in a reliable manner. तो ये हमारा यहाँ पे जो है तीनों रीजंस है कि जो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है वो मोर साइंटिफिक क्यों है. Now, in large organizations with huge transactions, statistical sampling is always recommended as it is unbiased and the samples selected are not prejudged. Now, फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर जो है वेरीफाई कर रहा है परचेजेस को ड्यूरिंग द ईयर और रियलाइज करता है दैट जो परचेज ट्रांजेक्शन है ना उस ईयर में वो मोर देन है 45,000 ए नंबर देन सच इज इन सच अ केस statistical sampling will be highly recommended in the audit program. Random sampling discussed earlier this topic is that method you will decide to choose sample in such situation. अब नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में सैम्पल साइज और उसका कंपोजिशन है वो डिटरमाइन होता है बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ द ऑडिटर. तो बेसिकली ऑडिटर के पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे हम जो है डिटरमाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं. सैम्पल साइज और उसका कंपोजिशन है ना वो हम डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटर. तो ऑडिटर के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो है सैम्पल साइज और उसका कंपोजिशन जो है डिटरमाइन होता है पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे. This approach has been in common application for many years because of its simplicity in traditional. Sampling versus traditional method of auditing. In most of the circumstances, the evidence available is not conclusive, and the auditor also takes a calculated risk in giving his opinion. Even by undertaking 100% of checking of the transactions, the auditor does not derive absolute satisfaction. This state of uneasiness and led pragmatic auditors to adopt the statistical theory of sampling to derive the necessary satisfaction about the state of affairs by checking only a part of the total population of entries. Auditor realized that they can derive good satisfaction by undertaking a much lesser checking by adoption of this technique in the auditing process. It is a mathematical truth that the sample, if picked purely on a random basis, would reveal the features and characteristics of the population. By adopting the sampling technique, the auditor only checks a part of the whole of mass of transactions. The satisfaction he used to derive earlier by checking all the transactions can be derived by a sample checking provided. He can put reliance on the internal rules and check with the client's information organization because they provide the reliability of the records. Sampling is used as a part of trust of controls. Auditor will check few internal controls in the operating effectiveness based on the conclusion derived. He can then design the sample for
If the internal control is satisfactory in its design and implementation, a smaller sample can give the auditor the necessary reliability of the result he obtains. On the other hand, if he certain areas controls or slack or not properly implemented, the automatic much larger sample for getting satisfactory result. So basically ना कि हमको कौन सा सैम्पलिंग मेथड जो यूज़ करना चाहिए स्टैटिस्टिकल या नॉन स्टैटिस्टिकल, ये ऑडिटर का मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है। कोई सैम्पल साइज वैलिड क्राइटेरिया नहीं है डिस्टिंग्विश करने के लिए बिटवीन स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोचेस। अब द factors that should be considered for deciding upon the extent of checking on a sampling pan are following. एक सैम्पलिंग प्लान पे हमको कितने एक्सटेंट तक चेकिंग करनी चाहिए, ये वेरियस फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज, इंटरनल कंट्रोल की स्टेट, टॉलरेबल एरर रेंज, डिग्री ऑफ द डिजायर्ड कॉन्फिडेंस, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक रिकॉर्ड्स। तो ये पांच है। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, size of the organization, state of internal control, adequacy and reliability of books and records, tolerable error range, and degree of desired confidence. Size of the organization, state of the internal control, and adequacy and reliability of books and records, tolerable error range, and degree of desired confidence. एक बार फिर से, size of the organization, state of internal control, adequacy and reliability, tolerable error range, and degree of desired confidence. ये फैक्टर्स जो है हमको कंसिडर करने चाहिए डिसाइड करने के लिए अपॉन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन सैम्पलिंग। नाउ, appropriateness of sampling approaches. In statistical sampling, the sample results are measurable as to the adequacy and reliability of the objectives, whereas in non statistical sampling, the auditor's opinion determines the sample size, but it cannot be measured how far the sample size would fulfill the। अब statistical sampling के advantages क्या है? तो कितने advantages है? 6 advantages है। There are 6 advantages of statistical sampling. Okay, कि जो अमाउंट ऑफ टेस्टिंग है ना ऑफ सैम्पल साइज वो इंक्रीज नहीं होता है इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एरिया टेस्टेड। तो amount of testing, that is sample size, amount of testing, that is sample size, does not increase in proportion to the increase in the size of the area universe tested. So the amount of testing, that is sample size, amount of testing, sample size does not increase in proportion to the increase in the size of the area, increase in the size of the area tested. The amount of testing, sample size does not increase in the proportion to the increase in the size of the area universe tested. So the amount of testing sample size does not increase in the proportion to the increase in the area, size of the area universe tested. The amount of testing sample size does not increase in the proportion to the increase in the size of the area universe tested. Sample selection is more objective and more defensible. Defensible. Sample selection is more objective and thereby more defensible. The sample selection is more objective and thereby more defensible. Defensible, not able, defensible.
more objective है, sample selection, और more defensible है. 2 points हो गए. तो 2 पॉइंट बोलते हैं कि amount of testing sample size does not increase in the proportion to the increase in the size of the area universe tested, and the sample selection is more objective and thereby more defensible. The method provides a means of estimating the minimum sample size associated with the specified risk and precision. So जो method है provide करता है means of estimating the minimum sample size. The method provides a means of uh, estimating the minimum sample size. The method provides a means of estimating the minimum sample size and associated with the specific risk and precision. Associated with the specific risk and precision. So the amount of testing sample size does not increase in proportion to the increase in sample size. The method provides a means for estimating the minimum sample size associated with the specific risk and precision. 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 No, the method provides a means of selection, estimating of minimum sample size, means of estimating associated with the specific risk and precision. ये also provide करता है means for deriving a calculated risk and corresponding precision sampling error. Calculated risk sampling error, that is the probable difference of the result due to the use of a sample in lieu of examining all the records in the group using the same audit procedures. Provide करता है better description of large mass of a data, then a complete examination of all the data. Widely accepted है क्योंकि more scientific है, कोई personal bias नहीं है, result of sample जो evaluated projected होता है वो एक more reliable way में होता है. Means provide करता है calculated risk और corresponding precision, that is sampling error का probable difference and result due to the use of sample in lieu of examining all the records in the group. तो 6 पॉइंट हम एक बार वापस से पढ़ लेते हैं. ठीक है. So the amount of testing sample size does not increase in proportion to this increase in the size of the area. The sample selection is more objective and thereby more defensible. Means provide करता है estimating minimum sample size associated with risk. Provide means for deriving calculated risk and corresponding precision, that is sampling error. Probable difference is in the result due to the use of a sample in lieu of examining of all the records. Group universe using the same audit procedure, better description of large amounts of data, then a complete examination of all the data, since non-sampling errors such as processing and clerical mistakes are not as large. Widely accepted way of sampling as more scientific without personal bias and the result of reliable way. तो ये तो हुए हमारे advantages. Then under some audit circumstances, statistical sampling methods may not be appropriate. The auditor should not attempt to use statistical sampling when another audit approach is either necessary or will provide satisfactory information in less time or with less effort. For instance, when exact accuracy is required or in case of legal requirements, etc., sometimes the audit staff has no knowledge about sample technique used, or in such circumstances, using statistical sampling becomes complex and inappropriate. Becomes complex and inappropriate. सैम्पलिंग प्रोसेस क्या है? पहले तो अब हम सैम्पलिंग प्रोसेस देखेंगे. सैम्पल डिज़ाइन करना, फिर सैम्पल साइज, फिर सैम्पल का सिलेक्शन, फिर उस पर ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन, प्रोजेक्टिंग, इवेल्युएटिंग ऑल रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट. Sample design, sample size, sample selection, audit procedures, nature and cause of deviation, and projecting evaluating results of audit. Sample design, sample size, sample selection, audit procedures,
nature and cause of deviation, projecting and evaluating results of audit. Sample design, sample size, sample selection, audit procedures, nature and cause of registration, projecting, evaluating results of audit. Sample design, size, and selection of items for testing. Now, when designing an audit sample, the auditor shall consider the purpose of the audit procedures and the characteristics of the population from which the sample will be drawn. The auditor shall determine a sample size sufficient to reduce sampling risk to an acceptable low level. The auditor shall select items on sample such a way sampling units as a chance of selection must be represented. Okay. Now, sample design. सैम्पल डिज़ाइन के 3 पॉइंट्स है भाई, फिर स्टैटिस्टिक और वैल्यू वेटेड पे हम इसको ख़त्म करेंगे, फिर बाकी का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया। नाउ सैम्पल डिज़ाइन, व्हेन डिज़ाइनिंग एन ऑडिट सैम्पल, ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए स्पेसिफिक पर्पस टू बी अचीव्ड, combination of audit procedures that is likely to best achieve that purpose. पहले तो कंसिडर ऑडिटर का कंसिडरेशन जो है इंक्लूड करेगा स्पेसिफिक पर्पस टू बी अचीव, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑडिट प्रोसीजर्स का जो बेस्ट हो अचीव करने के लिए वो पर्पस है ना। when designing an audit sample, the auditor's consideration include specific purpose to be achieved and the combination of audit procedures to that is likely to best achieve that purpose. तो ऑडिटर का कंसिडरेशन डिज़ाइन करते हुए सैंपल इंक्लूड करना चाहिए स्पेसिफिक पर्पस टू बी अचीव, फिर कॉम्बिनेशन ऑडिट प्रोसीजर का दैट इज बेस्ट लाइकली टू अचीव दैट पर्पस, फिर कंसिडर करना चाहिए नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस सॉर्ट एंड पॉसिबल डिविएशन ऑन मिस स्टेटमेंट एंड कंडीशन. Consideration of the nature of audit evidence sought and possible deviation or misstatement conditions or other characteristics relating to the audit evidence जो assist करेंगे auditor को define करने में what constitutes a deviation or misstatement, what population to use for sampling. Consideration of the nature of the audit evidence sought and possible deviation or misstatement conditions or other characteristics relating to that audit evidence will assist the auditor in defining what constitutes a deviation or misstatement and what population to use for sampling. Consideration of the nature of the audit evidence sought and possible deviation or other characteristics or assist what consider. In fulfilling the requirement of SA 500, when performing audit sampling, auditor performs audit procedures to obtain evidence that the population from which the sample drawn is complete. The auditor's consideration for of the purpose of the audit procedure includes a clear understanding of what constitutes a deviation or misstatement, so that all and only those conditions that are relevant to the purpose of the audit procedure are included in the evaluation of deviations or projections of misstatements. In a test of details relating to the existence of account receivables, such as confirmation payments made by the customer before the confirmation date, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में ना एग्जिस्टेंस रिलेटिंग इन टेस्ट ऑफ डिटेल में रिलेटिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, कंफर्मेशन या फिर पेमेंट्स मेड बाय द कस्टमर बिफोर द कंफर्मेशन डेट, मतलब कंफर्मेशन या फिर अगर हमको कोई पेमेंट रिसीव हो जाता है कस्टमर से कंफर्मेशन डेट से पहले या फिर शॉर्टली आफ्टर दैट डेट बाय द क्लाइंट,
तो हम उसको मिसस्टेटमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। एंड ऑल्सो अ रॉन्ग पोस्टिंग बिटवीन कस्टमर अकाउंट्स डज नॉट अफेक्ट द टोटल अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स के केस में रिलेटिंग टू अकाउंट्स रिसीवेबल कंफर्मेशन या फिर कंफर्मेशन डेट से पहले कस्टमर का पेमेंट या फिर आफ्टर दैट डेट, तो हम उसको कोई मिसस्टेटमेंट कंसिडर नहीं करते, या फिर रॉन्ग पोस्टिंग हो जाती है कस्टमर अकाउंट्स पे तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता टोटल अकाउंट्स रिसीवेबल पे। Therefore, it may be more appropriate to consider this is a misstatement in evaluating the sample result.